Good morning, students. Today we will do English workbook, grade 3rd. Write down date and let's see our exercise from the workbook. Now, new word and their meaning. Now in your textbook there is no new name of the bird, Robin and Joy. So here the meaning is given: a small brown bird with the red chest. Joy, a noisy, colorful bird. So that meaning is in your workbook. Grow means get bigger, धीरे धीरे बढ़ना. Beetle, an insect with a smooth hard back. स्मूथ हार्ड बैक, उसकी बैक होती है थोड़ी हार्ड होती है और अंदर से वो स्मूथ होता है, वैसे एक इंसेक्ट है. वायर, लॉन्ग थीन पीस ऑफ मेटल. आपने वायर देखा होगा. लॉन्ग थीन पीस ऑफ अ मेटल. फनी, फनी यहाँ इसका मतलब दिया गया है स्ट्रेंज, अनजाना. ओके, नाउ टेक द करेक्ट आंसर. Read the poem Bird Talk in your textbook and answer this question. First, take the correct answer. One day the robin and the joy were talking in the. वो लोग क्या कहाँ पर बातें कर रहे थे? So four options are given. From the 4 we have to write one answer. Garden, where they are talking in the garden. The birds think that people are funny because they don't like sitting on wire. Okay, we have a big head, no. Can a fly, no. Have a hand and legs, no. What they are thinking? Don't like sitting on wires. Third number, the two birds in the poem talk about the. वो कौन किसके बारे में बात कर रहे थे in the poem? Differences between birds and human. First one. So this is the answer of page number 9. Now turn the page. Question answer. Question answer. Answer the following question B. Answer the following question B. Who were the birds talking about one day? कौन कौन बातें कर रहा है? Answer is there. Robin and Joy were the birds talking about one day. Robin and Joy were talking about one day. Now second, why do you think the two birds talk about what people can't do? The 3 things that people can't do. They can't grow feathers, they can't eat beetles, they can't sit on wires. बर्ड्स क्यों ऐसा सोचते हैं कि पीपल नहीं कर सकते हैं? ओके, दे आर थिंकिंग कि दे आर अ ह्यूमन बींग्स एंड they cannot do. वो क्या नहीं कर सकते? They can't grow feathers, they can't eat beetles, they can't sit on wires. Now next, do you wish to be like a bird one day? Give a reason for your answer. यहाँ पर आपकी विश पूछी गई है. Do you want to become a bird? Okay. Yes, I wish to be like a bird because I can fly as high as I can. मुझे बर्ड बनना है. क्यों? क्योंकि मैं जितना ऊंचा उड़ सकूं मैं उड़ सकूं. I can grow my feathers. मैं अपने feathers बढ़ा सकूं. I can sit on wires and things. मैं वायर्स पर या दूसरी जो चीज होती है वहां पर मैं बैठ सकूं. I can sing a song. मैं क्या कर सकूं? मैं सॉन्ग गाना भी गा सकूं. Now find out the pair of rhyming word in the poem
Write them here. Grow, no. From the book, from the textbook. वहाँ से हमको ढूंढनी है rhyming word. Grow, no. Wings, things. They, way. So from the textbook we will find out rhyming word. Now here is an activity for you that you can make aeroplane with the using of card paper or any other paper that you can यूजलेस पेपर आप यूज नहीं करते हो वैसे पेपर से आप यहाँ पर देख के एरोप्लेन बना सकते हो. नाउ लेट्स राइट हियर आर सम साउंड दैट एनिमल मेक्स. राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द ब्लैंक. यहाँ पर दिया है क्लक. कौन उसका साउंड बनाता है? हैन, क्वैक, डक, बज, बी, ही, हो, डोंकी. सो हमको यहाँ क्या लिखना है? एनिमल के नेम लिखने हैं. यहाँ पर क्या दिया है? साउंड दिया है. यहाँ पर उसके नेम लिखने हैं. नाउ टर्न द पेज नंबर 12. Page number 12. Write a sentence with the each of sound you have written. हमने जो साउंड लिखे हैं वो यूज करके हमको उसके सेंटेंस बनाने हैं. नाउ द hen cluck at her chicks. जब जो चिक्स को बुलाती है तो अपने अंदर से वो साउंड निकाल के अपने बच्चों को बुलाती है, उसके बच्चे को, चिक्स को. सडनली ही हर्ड अ क्वैक. हम क्वैक क्वैक की आवाज उसको आती है. फ्लाइज वर बजिंग अराउंड द टेबल्स. यस्टरडे आई हर्ड ही हो साउंड. नाउ I have written one example of this all the sentence. You may add one more example here in this blank. I have written one example of each. You may add one example of this word. Now see. Write more words that rhyme with the each other words below. First entry has been done for you. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक नहीं लिखना है. राइमिंग वर्ड बनते हैं तो हमको यहाँ वी कैन राइट अवर ओन. यहाँ पर रूम, बूम, रूम, बेड, हेड, शेड, पिन, बिन, फिन, डैम, कैम, फैम, डाउस, माउस, हाउस. सो यू कैन राइट द राइमिंग वर्ड not as in the textbook. You can write your own. Now read this word. Thick, thin, throw, then, this, those, tomato, turnip, topple. So you may read this word at your home and write this exercise in your workbook. Thank you.